In the northernmost edge of Pakistan, where mountains touch the sky and glaciers sleep in frozen silence, lies a land often called Pakistan's water tower. A land blessed with one of the world's largest reservoirs of natural fresh water, yet home to communities who walk hours each day simply to fill a single can of water. This is Gilgit-Baltistan, a place where abundance and scarcity exist side by side, where the roar of glacial rivers flows just outside villages, but the households remain thirsty. The heart of a region that holds over 7,000 glaciers, feeding the mighty Indus and sustaining millions downstream. The people living closest to the source often struggle the most. If water is abundant, why do so many communities still suffer? Melting glaciers, broken channels, aging systems, and the silent courage of the people of Gilgit-Baltistan. हमारे पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है। पानी का मसला जो नाले से आ रहा है वो आकर दरिया में बहुत है, लेकिन मसला ये है कि हमारा जो कूल है ये बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं, बिल्कुल छोटी है। 20 फरवरी से हम अपनी ज़मींदारी शुरू कर रहे हैं। उसी दौरान हमें 18 दिन के बाद 16 दिन के बाद एक दफ़ा हमारा पानी का नंबर आ रहा है। हम सिर्फ इतना ज़मीन काश करते हैं जो हमारा टाइम में वही होता है, बाकी इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि वो फसल हमारा उसमें नहीं आ सकते। Every year, tens of billions of cubic meters of glacial water descend from the mountains of Gilgit-Baltistan. Water that could irrigate thousands of hectares, revive barren fields, and protect livelihoods. वाटर यूजर एसोसिएशन जो है, जो सोसाइटल सिस्टम है उसको फॉर्मलाइज करें। वाटर यूजर एसोसिएशन के जो बायलाज हैं उनमें अमेंडमेंट हम करवा के फिर उसके अंदर हमने इंश्योर किया कि ये ख़वातीन उसका पार्ट हो। फिर ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए जो ख़वातीन अपनी सेल्फ इनकम को इम्प्रूव करना चाहती हैं उसके लिए हमने उनको सीड्स वगैरह, वेजिटेबल सीड्स, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें इनपुट्स उनको दी, ट्रेनिंग्स और मुतल्लिका डिपार्टमेंट के साथ लिंकेजेस भी डेवलप करवाए ताकि वो अपना सेल्फ मेड या अपने मदद आप पे कोई ऐसा काम करें जिससे उनके 4 पैसे आ जाए। चैनल्स के अपर साइड और लोअर साइड पे जहाँ पर भी हमें कोई स्लोपी एरिया मिला है वहाँ पे हमने एफॉरेस्टेशन करवाई है। फिर वहाँ पे कुछ आर्चर्स लगवाए हैं। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी को भी हमने मुतारिफ करवाया, ख़ास तौर पे जीआईएस मैपिंग हमने करवाई ताकि ये जो भी उसके क्या इम्पेक्ट क्या होगा शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में, उसको वर्कआउट करने के लिए इन तमाम 10 के 10 साइट्स का हमने जीआईएस मैपिंग करवाई है। But most of this water never reaches the land where it's needed, because between the glacier and the field lies a fragile system, centuries-old water channels built from mud, stone, and wood. Channels that once served small communities, but now crumble under new pressures of climate change, population, and time. Some are broken by landslides. Some leak so heavily, and many have never been rehabilitated. A region overflowing with water, but unable to use it. The mismanagement of water systems has turned fertile valleys into struggling pockets of land. Not because nature has stopped giving, but because infrastructure has stopped delivering. Gilgit-Baltistan is warming faster than the global average. Glaciers are melting earlier in the year, bringing sudden bursts of water when fields do not need it, and long dry spells when they do. Meanwhile, damaged channels fail to capture peak flow. Thousands of gallons spill onto rocks and sand. A freshwater loss that cannot be recovered. Water is not only a natural gift, it is a system that must be maintained. And in Gilgit-Baltistan, that system has remained unchanged for generations. Climate change did not create the crisis, but it magnified every existing weakness. When a channel breaks, water bypasses entire communities. Across several valleys, new partnerships are showing what is possible. Through pilot initiatives, including those by GBRSP, damaged channels have been rebuilt, water flow restored, and barren land revived.
Communities now share water fairly. चैनल है ये बिल्कुल इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। आधा गांव जो है इस वक्त बंजर है। तो चैनल में जो है ना वो बहुत पुराना चैनल है, 1973 में जो बनाया गया था उसमें कैपेसिटी कम है। अभी आबादी बहुत बढ़ गई है, 7,000 8,000 की आबादी है और ज़मीनें बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन पानी नहीं है। The story of water in Gilgit-Baltistan is not just about scarcity or abundance, it is about responsibility. Because water is not merely a resource, it is an amanat, a trust. The future of Gilgit-Baltistan, its fields, its homes, its people, depends on how we honor this amanat. Let's revive tradition, conserve every drop, and cultivate a sustainable future for Gilgit-Baltistan.